Away from you. It's okay, ma. Both the umpires, please note. Noted. Noted. Welcome back, everyone. The second match of the day on day number 2 of this DASARA Trophy cricket tournament being played here at the Vellore Cricket Institute here in Vellore in Tamil Nadu. The match between C Squad Cricket Club versus Nellore Warriors. Both the teams now need wins under their bucket. And it's so important. C Squad Cricket Club having lost the match versus the Strikers Academy yesterday. And now Nellore Warriors having lost both back-to-back games. Yesterday, the first one and the last match yesterday versus the Victory Vipers. And now today, Victory Vipers lost a close-fought contest versus Strikers Academy. What a match! Batsman, right arm out to you. And I'm sure everyone would have loved that contest. The nail-biting finish, which went right down till the wire. And what a clean connection to finish it off from the tailenders to win the match by just 1 wicket. And to hand a defeat for Victory Vipers. So now here, C Squad Cricket Club are now they have elected to bat first after having won the toss versus Nellore Warriors. They are now 3 for no loss after 1.1 overs. As Anand Sagar and Eric Matthew Abraham are the opening batters. Shubham has already bowled the first over for just 3 runs. It's now Shiva who will be bowling in. Boundary. This was very nice, very nice stroke that you can see on the leg side for 4 runs. Clipped on the leg side on to nice square leg. I would say more on the square leg side for 4. It's always so good to see on the leg side again. The wicket keeper does very well to stop the ball. Otherwise, it would have surely gone towards the boundary. I tell you, the outfield is magnificent today as compared to yesterday, where it was little slow. And also, the sun has come out with all its glory. So the moisture, any bit of water on the ground on the outfield would have surely just dried up. And so it's very important for the bowlers to maintain a tight line and length outside off stump. This time a little bit slower as Anand Sagar on strike. Will play that ball a little softly in there. But he's a dreadful sight. Yesterday he started with back-to-back boundaries to start off the proceedings in the second match. And what is that? And I remember the bowler was having a smile on his face because he's never thought in his wildest of dream that Anand Sagar will start so vociferously off the back foot, slicing it towards the man at point for no run. The score remains a 9 for no loss in 10 balls. It's collecting the win for Strikers Academy versus Victory Vipers. What lovely connections, what pick-up strokes there was from the tail enders, Abraham, David, and then the Ram Kumar. And that stroke by his hips to finish off. Needed 2 runs, and he said, why 2? Boundary. 6 runs, and now that's a boundary. Boundary will give some good runs for Eric Matthew Abraham. He'll be 5 runs to his name. And the figure
The batting figures will move That to double figures, pass చేయండి 13 for no loss now. And level balls with one more ball now remaining in the second over from CH Shiva. Already has gone for 10 in this over, including two boundaries, a single, two dots, and a wide. Last ball, Eric Matthew Abraham wanting to play on the leg side will just get a single on the leg side towards square leg to finish off this over. Two overs done. It's 14 for no loss for C Squad Cricket Club. same bowler. बहुत जोर से मारने की कोशिश की थी ये आनंद सागर ने। शुभम कंटिन्यू करेंगे आपका अपना पहला ओवर, अपना दूसरा ओवर माफ कीजिएगा। 3 रन ऑलरेडी दे चुके हैं शुभम। White ball. ये गेंद अच्छी होती, अगर थोड़ा सा मिड लाइन ऑफ पे होती ना तो ये क्लासिक, शायद क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉलिंग होता, लेकिन डाउन द लेग साइड चला गया है। वाइड का इशारा अंपायर से। स्कोर पहुंच चुका है 16, किसी नुकसान के डाउन द ग्राउंड गया है सीधा, बिल्कुल सीधा। और ये कैमरा अटक गया है क्या यहाँ पे? तो हाँ जी, सीधा, बिल्कुल सीधा 6 रन। अब कोई कॉम्पस लेके आए, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आए, ये जरूर बताएगा कि कितना सीधा ये खेल दिया है एरिक मैथ्यू अब्राहम ने। ये सही कनेक्शन है, ये देखिए सीधी बैट से और पूरा फ्लैट बैट, बैट बिल्कुल खुला रखा, बिल्कुल सीधा अपना बॉडी पोस्चर और बैट के साथ, और 6 रन की बढ़ोतरी होते हैं यहाँ पे आनंद सागर है एक्चुअली। थर्टीन नॉट आउट ऑफ 7 पुल कर दिया है इस बार। वहां पे एक फील्डर है मौजूद, लाल कैप पहना हुआ है उन्होंने। और 1 रन मिलेगा आनंद सागर को इस बार। एरिक मैथ्यूज आ जाएंगे स्ट्राइक पे। एरिक मैथ्यू अब्राहम, पिछले मैच में अब्राहम डेविड ने कर दिखाया था कमाल। बैकफुट पे जाके हल्का सा पुश, हल्का सा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कोई 1 रन मिलेगा जरूर यहाँ पे। हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला उसको। आनंद सागर आ जाएंगे स्ट्राइक पे। 14 नाबाद खेल रहे हैं 8 गेंदों में। देखिए करंट रन रेट 9 रन के औसत से चल रहा है। सॉफ्टली खेल रहे हैं अभी ऑफ साइड पे। ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही महंगा होता है जब आप अगर अपने लय, अपने धैर्य और एक लाइन को अगर पकड़ ना पाए तो मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लय पकड़े और जल्दी जल्दी विकेट ले। डाउन द विकेट कहते हैं इसको खेलने के लिए, Over. लेकिन स्टंपिंग, हाँ जी ये विकेट हो जाएगा। सो आनंद सागर बॉल को भाप नहीं पाए, उनके बैट बिल्कुल नीचे से चली जाएगी। और एक मैथ्यू अब्राहम को देख के बोल रहे कि नहीं, मैं तो सही इंटेंशन से गया था, लेकिन ये पार्टनरशिप हो जाएगा अभी टूट। 24 रन की पार्टनरशिप बनी हुई थी, 18 गेंदों में चली जाएगी। सो 24, 1 विकेट के नुकसान पे सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब को मिल गया पहला झटका। 1 बॉल बाकी है अभी तीसरे ओवर में। Over. name Shine. Bowler, same bowler. Okay, noted. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ തട്ടി അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എത്തുള്ളിച്ചാൽ ആദ്യം വിളിച്ചോ.
White ball. ஹைட்டு இங்கே மேலே வேற. பால் கோயிங் டவுன் தி லெக், ஹைட்டும் கூட. स्लाइटली अवे. CH जीवा आए हुए हैं बॉलिंग करने के लिए यहाँ पे 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे उसी स्क्वाड के क्लब साइन जॉन जैकब नाबाद अभी भी और एक रन भी आया नहीं, अभी भी तो आए हैं अभी. हाँ ठीक इनसाइड एज हो जाएगा, बिल्कुल बाउंड्री चली जाएगी. गेंद अंदरूनी किनारा रखते हुए ये गेंद एक्चुअली मिड विकेट की दिशा में जाके खेलने वाली गेंद थी, लेकिन फिर भी 4 रन जरूर मिलेगा उनको. देखिए कितना शॉट था, कितना टाइम था उनको पुल करने के लिए, लेकिन गेंद ज्यादा उसमें उछाल नहीं थी, इसके वजह से बिल्कुल पीछे चली गई ये गेंद और अंदरूनी किनारा लगते हुए बैट पे और 4 रन के साथ अपना खाता खोलेंगे यहाँ पे शाइन जॉन जैकब. और इनका नाम सुनते ही जैसे मैंने कल बोला था एप्पल टॉम का नाम याद आता है, जो साउथ इंडिया में केरला के क्रिकेटर हैं, रजिस्टर्ड क्रिकेटर हैं केरला में, जो मैंने ट्रिवेंड्रम में कमेंट्री की थी. क्रिकेट एसोसिएशन फॉर मेंस क्रिकेट है, अच्छा टूर्नामेंट डोमेस्टिक. लंबे खिलाड़ी वो एक राइट हैंड बॉलर थे, तो ये बैट्समैन शाइन जॉन जैकब हमें से चाहेंगे उनको शाइन करे अपने क्रिकेट कैरियर में. मिस्टर जे तीस रन 1 विकेट के नुकसान पे सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब. First ball wide, second ball dot. Single, second ball single. Leg by single. Four. Kill. Side. Stick to wheel bro. ஃபர்ஸ்ட் பால் நீங்கள் தானே சார் ஆடினது? ஃபர்ஸ்ட் பால் லெக் பை. ഈ വിക്കറ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പിന്നെ തിരിയുന്നുണ്ട് ഈ ബോളല്ലേ നേരെ മറ്റേ പുറകെ ഇറക്കി നല്ല പുറകെ എറിയുമ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്യും. వైడ్ లెగ్ బై బౌండరీ ఓకేదానా? ஆமாம். இன்னும் 4 பால் ரிமைனிங் இருக்குல்ல சார்? 4 balls remaining. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? फोर. थोड़ा तेज भाई लोग, थोड़ा तेज यार.
टायर के साइड से बॉल जा रहा था थोड़ा हिलो भाई हाँ तो थोड़ा रेडी रहो ना बॉल के लिए स्टार्ट लियो ना बस पासा और 2 गेंद बाकी है अभी लास्ट 2 4 ओवर को कंप्लीट करने में 33 एक विकेट के नुकसान पे आनंद सागर 14 नाबाद है अभी 10 गेंदों में और ये देखिए कैसा स्लाइस हो गया है मैं वही सोच रहा था आनंद सागर तो जरूर है स्ट्राइक में तो थोड़ा सा वहां पे शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक्चुअली तो मैथ्यूज चले गए हैं वापस अपने पेविलियन तो आनंद सागर 14 नॉट आउट 11 गेंदों में शाइन जॉन जैकब 7 नॉट आउट 3 वाइड बॉल ये वाइड होगा हाँ जी बिल्कुल बाहर बहुत ज्यादा बाहर थी ये तो एक और गेंद शेष अभी 4 गेंदों में अभी 4 ओवर का अगर आप यहाँ पे देखें तो इरिक मैथ्यू अब्राहम स्टंपिंग हो गए थे प्रत्युष राज है विकेट कीपर और शुभम ने ले लिया था विकेट ये आखिरी गेंद ब्लॉक होल में खेलने पे गया था ये गेंद ओवर बहुत ज्यादा ठीक से बैट पे लगा नहीं है तो कोई रन नहीं मिलेगा 1 रन मिलेगा जरूर 4 ओवर के बाद सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब 35 एक विकेट के नुकसान पे रहने दो आप आएगा बीच में बाउंड्री It was a very good shot. Outside off stump, and Anand Sagar gave it the full strength as much as possible, and has gone towards the boundary for 4. It's a very interesting stroke because he wanted to play it down the ground, but it was not very much intentional to play it लास्ट ओवर over. It's like an inside stroke, but the strength, the power, and the mindset of Anand Sagar is always to hit it over the top, as like Girish Prabhu from Victory Vipers. That's a misfield. It's a misfield that Shubham doesn't want to see again and again. No, no, no. Especially of the batting of S. Anand Sagar, when he wants him to bog down, he want him to be tight. They're actually letting him go off the hook. So a couple of runs there for Anand Sagar. He'll move on to the 20s into 21, not out of 14, 2 fours and a 6 already to his name. He deals more into boundaries than in runs off the back foot very, very strongly. This time the point fielder does a better job. Steal misfields, but this time it's better, very, very better, as they will get just 1 run for the score to flip over to 42. And now it's Saint John Jacob will have the strike. The right-hander, 7 not out of 3. A bit of change of field, not very much.
The fourth ball of the fifth over on the leg side. You'll get a run as there's a flip Two over, more. but it's just a leg by, so it will not be credited to the account of Saint John Jacob, but will be an addition on the extra. We'll keep on improving as we go along. The fifth ball of the fifth over now to Anand Sagar, very short. You have to feel yourself lucky when Anand Sagar does not open his arms to slash you through, to cut you into two halves. And that's whether either the ball is slow or the line is correct. Last ball of the fifth over. Sorry for that. This time again, shot wanting to avoid, Over. but Side change. not only offside, but down the ground, doesn't make a connection onto the same gloves of the wicketkeeper. He survives. 5 overs For one done. after 5 overs. And C Squad Cricket Club are 43 for 1 versus the Nellore Warriors. ఏం చేస్తున్నావు అబ్బే బాయ్ బయటికి వెళ్ళు నాన్న నువ్వు బయటికి వెళ్ళాను క్యాచ్ పెడితే స్ట్రైక్ ఉండేది కాదు క్యాచ్ ఉంటే ఇప్పుడు స్ట్రైక్ లేదు What an absolute connection that was from Anand Sagar. Who else? It's Anand Sagar who has deposited that cricket ball over. Those were the technical official seats. He goes 1, 2, 3 thrice. The umpire is almost like dancing his hands towards the sky. ఫైనల్ కబే And as if 20. to show that he's also enjoying that stroke from Anand Sagar. Moves on to 20th of 18. So CS Shivari really need to get his X correct, and the line has to be 18 teams, I absolutely think. spot on. It can be 1 or 2 weird deliveries. The kind of mood and the form that Anand Sagar is, even if a ball is being pitched on a right land, he has that extra charisma of carrying that cricket ball all across the fence. So that's the kind of disdain mood he comes on when he has the sword in his hand. Much better and fuller this time. Almost yogged himself. Oh, he cannot stop that ball from going beyond him and across the fence. Just in number 5 in there. That will be a boundary.
almost like a check stroke, but it has gone towards the boundary very, very quickly, despite a valiant dive on the ball. There we go, just a check push. And the partnership will now move on to 31 of just 16 deliveries between Anand Sagar and Saint John Jacob. Fifth ball of the sixth over whips that ball away from middle stump. It should be a couple of runs now again for the name of Saint John Jacob, as the throw will come in very, very strong. The stumps, the off stump will get uprooted. We've already seen in the last match how the middle stump got uprooted. That was when the fifth wicket was down for Strikers Academy, but what a comeback for them. The last four wickets that produced 90 odd runs to seal the victory for them, and the first defeat for victory Vipers today, after having won back-to-back matches, the second and the third yesterday. So Strikers Academy now have two back-to-back wins, having won the first and the first match today also. Short delivery hoiks it away. He will get the placement very, very correct. Saint John Jacob moves on to 18 of 8, and the score now all leaking along after 6 overs at 61 for 1. One for one after 6 overs. சார் தப்பா நினைக்காதீங்க, நீங்க சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோர் கேட்கல, லாஸ்ட்ல ஓவர் பண்ணா கேக்குது. ஸ்கோர் சொல்லுங்க மறுபடியும். 61 for 1 after 6 overs. Thank you. After 6 overs, 61 for 1 is at 10 runs, at 10.17 runs per over. Is C Squad Cricket Club moving along. Short delivery again. First up from the captain, Aejas Surya, this time to Anand Sagar. He's gone on the back foot. Well, one run immediately of the very first ball. Ball strikes Sunil Narayan, as I mentioned, goes down the ground on the offside. Is there a fielder? There is no one. 1, 2, 3, 4. It will just slice it through. There's a fielder coming in all the way from long off to get that ball, almost fielding it from more squarer long off position. But couple of runs there for Saint John Jacob. We move on to 20 of just 9 deliveries. And it'll be interesting to see how he can gel up with Anand Sagar, who's on 30 of 20 at the other end. These batters can mix and match, and both the batters can sting on the opposition. This time, kind of a knuckle ball in there didn't move and rise up too much for Jacob. It's off the back foot, and we'll be cautiously playing towards the man with extra cover. No run. Flight a delivery again, wanting to slash that ball cross batted stroke, trying to go against the spin of that ball. Just one run on the onside towards the cow corner, and we'll give the strike to Anand Sagar now with 2 more balls remaining in the 7th over. It can be the prodigious be, but what can be the strangest be? Again wanting to slash it hard when you know. The previous matches you've seen, it is going through. I think that Vishnunath, when he slashed so hard. There was a deep sleep fielder, and it went over his head and on towards the boundary. And it proved fruitful for Strikers Academy, as they won by just 1 wicket today versus Victory Vipers.
That will also bring the end of the over with no run of the last ball. 7 overs done, 66 for 1 on the board for C Squad Cricket Club. नेमार 24 आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. लेफ्ट आर्म स्पिनर है. फ्लाइट्स द डिलीवरी और सीधा उठा के मारे आनंद सागर ने. और इनको मिलेगा 6 रन. 6 बेहतरीन और 6 लबबदार शॉट. वाह क्या करारा प्रहार था. क्या स्वागत किया है उन्होंने नेमार 24 को. बिल्कुल सीधा कॉम्पस लेके आए, ज्योमेट्री बॉक्स खोल के कुछ भी लेके आए वहां पे. और ये आपको मिलेगा कि क्या शॉट है. 180 डिग्री, 360, 360 डिग्री सीधा. वो देखिए मिडिल स्टंप पे टप्पा खाई और वहां से उनको बोला कि चलिए जी थोड़ा सा नाप लीजिए अपने आप को. और वो पहुंच जाएंगे 37 22 गेंदों में, 2 4 और 3 सिक्सेस के मदद से. और स्कोर पहुंच गया अभी 72, एक विकेट के नुकसान पे. दूसरी गेंद थोड़ा सा बैकफुट पे जाके उसको थोड़ा सा डीप जाके खेलने की कोशिश की थी. इस बार उन्होंने कोई रन नहीं मिलेगा. बैक टू बैक डॉट्स इस बार. लेकिन क्या स्वागत था नेमा 24 का. बिल्कुल सीधा हाफ ए डजन के लिए. देखिए वो ज्यादा फ्लाइट करने में थोड़ा सा चूक रहे हैं अभी. लेकिन मन में होता है कि फिर से फ्लाइट दू, ये फिर से उठा के मारे. एक ऐसे फॉर्म में है, एक विनाशकारी फॉर्म में है आनंद सागर. अभी सिर्फ 1 रन मिलेगा. अभी ऑफ द स्ट्राइक होके अभी शाइन जॉन जैकोब आएंगे. वो भी अच्छा खेल रहे हैं 21 नाबाद 12 गेंदों में. और सीधा फिर से जॉइन जॉकेब ने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी हाथ खोल सकता हूं. और आनंद सागर बोल रहे अच्छा आप ऑफ पे खेलिए, आप सीधा खेल रहे हो. और पार्टनरशिप पहुंच गया है 55 अभी 29 गेंदों में. ये करारा प्रहार जारी है अभी सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब से. आनंद सागर और जॉन जैकब के तलवार से देखिए बिल्कुल सीधा. इस बार थोड़ा सा मिडिल एंड लेग के दिशा से उठा के मारा था उन्होंने. लेकिन 6 रन तो जरूर और पक्का मिलेगा. 73 पे पहुंच गया है ये स्कोर. अभी 79 पे पहुंच गया है. और 8 ओवर के बाद डॉट डिलीवरी था ये लास्ट वन. 8 ओवर के बाद सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब 79, एक विकेट के नुकसान पे.
8 ओवर के बाद 79 एक विकेट के नुकसान पे सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब यहाँ पे खेल रहे हैं नेलोर वॉरियर्स के विरुद्ध। फिर से सीधा उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे कप्तान एज सूर्या को। बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं कर रहे थे जैसे नेमार 24 ने किया था उनको पहले गेंद पे छक्का। फिर से आ रहे हैं अभी, फिर से फ्लाइटेड, फिर से सीधा मारने की कोशिश की थी लेकिन इस बार बॉल थोड़ा सा फिरकी मारते हुए अंदरूनी किनारा लगा बैट का, लेकिन कपल ऑफ रन जरूर मिलेगा आनंद सागर को और पहुंच जाएंगे 40 पे इस बार 27 गेंदों में और स्कोर पहुंच जाएंगी 81 एक विकेट के नुकसान पे। रेजिस सूर्या बिल्कुल जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यही है इसलिए वो कप्तान है इस टीम के और उनको पता है कि ये क्या करने की कोशिश करे, क्या रणनीति है, दिमाग में क्या चल रहा है और इसके इसके साथ ही आपको खेलना पड़ेगा। ओहो इस बार टाइमिंग गलत थी, क्या फील्डर मौजूद है, क्या फील्डर, कोई मौजूद नहीं था वहां पे। मुझे लगता है बहुत सा टाइम मिला था लेकिन ये शायद ऑफ द ब्लॉक्स थोड़ा सा स्लो थे। हाँ जी एज सूर्या वहां देख रहे हैं बिल्कुल नाखुश, और क्यों ना हो नाखुश जहां पे हमको विकेट चाहिए और इतना टाइम था। आनंद सागर का ये विकेट लेना बहुत जरूरी है अभी और पार्टनरशिप देखिए अभी 58 पे पहुंच गए हैं 33 गेंदों में। तो ये सुनील नारायण एज सूर्या, हाँ शॉर्ट डिलीवरी फिर से, इस बार तो उनकी खुद की गलती है जी। एक टप्पा खा के फील्डर की तरफ आएगा, वो बहुत ही भाग्यशाली रहे एज सूर्या मैं कहूंगा क्योंकि इतना ज्यादा शॉर्ट था। एज ए स्पिनर इतना ज्यादा शॉट डालने की या तो एक ही बात हो सकती है कि आप सोच रहे हो कि वो सीधा मारे और डाउन द थ्रोट जाए फील्डर के हाथों में। 5वां नंबर गेंद 9 ओवर को आनंद सागर के इस बार थोड़ा सा डिफेंसली पुश किया है लेग साइड पे और एक रन जरूर मिलेगा उनको और इसके साथ स्कोर पहुंच गया 84 एक विकेट के नुकसान पे। नीचे सूर्य ने ऑलरेडी 10 रन दे दिया है 11 गेंदों में। अभी स्ट्राइक पे है शाइन जॉन जैकब जो खेल रहा 28 नाबाद 15 गेंदों में, लेकिन द करंट रन है 10 से थोड़ा सा कम 9.51। फाइटर डिलीवरी आउटसाइड ऑफ सम, सीधा खेल दिया है फिर से, ये फिर से 6 रन करारा प्रहार दंडनाता हुआ ये 6 रन और इसके साथ ओवर खत्म हो जाएगा एजे सूर्या का। 2 ओवर के बाद उन्होंने दे दिया 16 रन और यहाँ पे 9 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 90 एक विकेट के नुकसान पे। Nine overs, 90 for one for C Squad Cricket Club with just one hand trying to play the ball, almost like slashing that ball with a knife into half. Anand Sagar will move on to 43 in 30 balls with that single. We'll give it to Shine John Jacob, who's on 34 of 16. Neymar, 24, first over produced 13 runs, including 2 sixes onto his name. The last over also, what an over that was. Neymar on 24 on to Shine John Jacob has to reach out for that ball. It's the amount of turn also, and also the fact that he was waiting for that ball to come. So it's good always if you can play on the front foot, then on the last moment go on the back foot to play that stroke. There you go, almost like a repeat of the previous delivery. Playing it towards the sweeper cover. Fielder for just a single. The run will now move on to 92 for 1. Like the delivery outside off stump will be slashed by Anand Sagar with so much of power. The bottom hand when it comes to the picture to play that stroke.
that's when it makes it so much tough for them to play that stroke, to actually endure himself from not playing a false stroke of the back foot. This time again a slower one, not much of the spin and flight from Neymar 24. Just one run towards that man at mid-on for a single from Saint John Jacob. And now again Anand Sagar is just a stroke away from his half century. I would say this is actually a slow innings, and going by what Anand Sagar is known to be, having faced 31, now 32 or 44, I'll say it's one of the most slowest innings that he has played in his entire career. And again, he wanted to play that stroke, but it was very much slowly being bowled. 10 overs done, halfway of the innings through of this second match of the day on day number 2. C Squad Cricket Club are 94 for 1 versus the Nellore Warriors. And an update from England versus Pakistan at Multan is that England have won the first test by an innings and 47 runs. And the record is that it's the first time ever in Test cricket history that a team has lost by an innings after scoring 500 plus in the first innings. And this is Pakistan's. I would say the horror run has actually continued in Test cricket after the loss versus Bangladesh 2-0. And this is the sixth consecutive loss in the format for Pakistan and their seventh loss at home in the last 9 tests. So England has absolutely been fabulous today. So on a pitch which was actually not offering any assistance for the bowlers, they've actually done so much. And the end form, Joe Root and Brook, with that partnership of 454 broke the backbone for Pakistan. The last batsman, Abrar Ahmed, was absent hurt. So after 9 wickets, they were all out for 220. So what a win for England. And now they can march along for the second test, which will be played at Rawalpindi. Back in India here at Vellore in Tamil Nadu,
It's C Squad Cricket Club who are marching along very well at 95 for 1 as Deva Kumar has been brought on the action by the captain S.J. Surya to break this partnership, which is getting very, very threatening now. At 72 of 46 balls is the partnership now. Deva Kumar steaming into ball to Saint John Jacob. He wants to slash it down the ground, misses the ball completely between his bat and pad onto the safe gloves of the wicketkeeper, who throws it back to the bowler. See this now, the sun is shining brightly as ever. There's this helmet behind the wicketkeeper, so little bit cautious, sir. So because if the ball goes and hits the helmet, as per the rules, 5 runs will be awarded to the batting side. This is good bowling. Little bit, I think that was a tough call from the umpire. Really don't know. I've already seen a tough call in the previous match. I think there's no complaints which is coming from Deva Kumar. So I think it was fine inside the line. This is the second extra which has come in this over. The ball is not keeping up too much. It's become a little low. If we are in this 11th over, and that will finish the over. 11 overs done. C Squad Cricket Club are 97 for 1 versus the Nellore Warriors. Oh, what a stroke making that was. AJ Surya comes. AJ Surya gets dismissed from his presence of the very first ball. And guess what? Whose blade it is? It's via the blade of S. Anand Sagar. This man is now going from strength to strength, from force to force. And I'm shuddering to believe that he might just rack up the numbers very quickly. It's the 100 up also on the board for C Squad Cricket Club, 101 for 4. And Anand Sagar moves on to 48 not out of 35.
The match will now continue on delivery after this boundary. 101 for 1 on the board now for C Squad Cricket Club. Anand Sagar just a couple of runs away from what will be a very, very good half century. It will be a little slow in terms of what Anand Sagar is believed to do, very much deep inside that crease. And also sport, look at its grey color helmet. It's sport of violet and red and blue on his t-shirt. Back is completely black, and then yellow. Now continue. Also sports that yellow color padding. So it's combination of different colors there from Anand Sagar. A single to get him off the strike onto 49 now 38. Very, very short delivery off the back foot goes Saint John Jacob towards the mid-wicket fence. Is it a catch? Is it a catch? Has he claimed the catch? Yeah, John Jacob is a goner. He has hit it straight down. It's not exactly down the throat of the fielder, but he has that smile. You can see the teeth gleaming and shining under this blazing sun. And to say that the wicket has now gone down, this partnership has actually broken now, and it's 1-0-2 now for 2 on the board. As Sanjakov has to go back to the pavilion. It was caught by Mohan. What a brilliant catch that was. And so 37 runs off 24 balls, 3 fours and 2 sixes to his name at a strike rate of 154.17. And Anand Sagar will left stranded, waiting for his partner to come up. It's 1-0-2 for 2 with one more ball remaining in the 12th over. Anandu KB has come out to the middle, joined as Anand Sagar. Aegis Surya, the captain, has managed to break this partnership and also finish this over. 12 overs done, a wicket, a single, 2 dots, and a boundary in this over of Anand Sagar, of S.S. Surya. It's 102 for 2 in 12 overs with 8 more overs remaining in this first innings of the second match on day number 2 of this DASARA Trophy cricket tournament being played here at the Vellore Cricket Institute ground here in Vellore in Tamil Nadu. You're watching all this match live on the YouTube channels of the professional cricket competitions and the Ultimate Cricket Series. So keep following us and don't miss any action of this cricket fever. And that will be the half century for S. Anand Sagar. I don't know whether he realizes, but he has made it off 39 balls, 3 fours and 3 sixes. What a strike rate, 128.21. Little bit slow in means of the kind of batsman he is. But he must have got a message to play it a little slow. That's why we have seen some shots being played down the ground. But this half century will put him in good stead, and also the score moving very strongly for C Squad Cricket Club at 103 for 2. A projected score at 152. But a brilliant half century from S. Anand Sagar. We've already seen a terrific century from Girish Prabhu today, playing for Victory Vipers. This shot has been played inside out over extra cover, but towards that man at long off, standing in there. He will throw that ball like he wants to do bowling. He says, "Can I just come up to bowl?" You know,
It's sometimes when the ball doesn't come up, it's actually like a lone world for you. But when it comes, it wakes you up. Short delivery, wanted to slash it. Oh, what a fielder! This time he will not have to walk, he'll have to run down towards that ball, but the ball will have better legs and velocity onto it to cross the boundary for 4 runs. Nice clean striking from Anand Kebi. Oh, sorry, from S. Anand Sagar. Short, wide, and the invitation was there in his 11. He just has to throw the kitchen sink on it for a boundary. Outside off stump, this time wanting to squeeze that ball. Will squeeze it eventually. Will get a single. That's what he wanted to do. Wanted to play a reverse lap. It will be leg by. It will be a little outside off stump, and that's why the appeal was interestingly not there. Generally, they do appeal whenever the ball gets on the pad. One more ball now remaining in the 13th over. Score on 1-1-1 for 2. Remembrance of the former umpire, David Shefford, was to pull off one leg up, but this time it will move up very, very quickly from 1-1-1 to 1-1-2. Oh, there is no one. The ball kept on moving and moving in the straight direction. 4 runs. As Anand Sagar will move on to 59 of 42, which will bring the end of this 13th over. It's 1-1-5 for 2. I thought there was someone coming, but then I saw there's a boundary rope. There's not even a single human there in the picture. And that was an easy boundary, slashed back past the bowler. 4 runs, Anand Sagar on to 59, and the score on to 1-1-5 for 2. एक सौ 15 2 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर के बाद 7 ओवर बाकी है. शुभम आएंगे अपने आखिरी ओवर करने के लिए स्पेल का. 3 ओवर में उन्होंने दे दिया 19 रन. एक विकेट भी है उनके नाम. सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब. हाँ जी, कैमरामैन ने फाइनली उसको जूम आउट करके दिखाया है कि देखिए बादल है गहरे और कुछ संकेत हो सकता है, लेकिन क्रिकेट जरूर मिलेगा. यहाँ पे संकेत बन गया है खतरा, क्योंकि आनंद के भी को चला जाना पड़ेगा पेविलियन के वापस, और रिवर्स करके मारना चाहते थे. प्रीवियस ओवर में भी यही कोशिश कर रहे थे, नाकामयाब थे. इस बार कामयाब हो गए थे लगाने में बैट, लेकिन सीधा उस गली फील्डर के हाथों में. तीसरा विकेट का हो गया है पतन. 115 पे 3, 13.2 ओवर के बाद. एक सौ 15 3 विकेट के नुकसान पे आनंद प्रकाश आए हैं.
आनंद सागर को ज्वाइन करने के लिए, जो नॉन स्ट्राइकर पे खेल रहे हैं 59 नाबाद 42 गेंदों में। और देखिए क्या कपड़ा है, हेलमेट नहीं है ये, ना कैप है, ये कपड़ा उन्होंने एक फेरा रखा हुआ है उनके सर पे, बिल्कुल ब्लैक कमांडो लग रहे हैं दूर से। लेकिन क्या ये थोड़ा सा ब्लैक कमांडो की, तो आजी क्या गेंद है, ब्लैक कमांडो ने मिस कर दिया है ये गेंद, आनंद प्रकाश। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। ये देखिए एक भी रन आया नहीं अभी भी, एक विकेट और 3 डॉट्स है। 5वां गेंद करेंगे अभी शुभम, लेफ्ट आर्म, ये बहुत ही शॉर्ट था इस बार, बैट पे जरूर लगा था लेकिन अंदरूनी किनार लगते हुए विकेट कीपर ने पीछे आके उसको पकड़ा है और थोड़ा सा इसको सिंगल देने की कोशिश कर रहे हैं अभी आनंद सागर को। तो क्या ये विकेट मेडन होगा या कोई सिंगल आएगा इस बार? शॉर्ट डिलीवरी, उसको पुल करने की कोशिश की थी, कुछ भी लगा नहीं है, विकेट मेडन हो जाएगा यहाँ पे शुभम का। और 14 ओवर के बाद सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब 115 3 विकेट के नुकसान पे। $116 for 3. C Squad Cricket Club in 14.1 overs. Now little less than 6 overs now remaining. Anandu Prakash now on 0 not out of 4. As Anand Sagar 60 not out of 43. Flighted delivery goes down the ground. Anand Prakash, but just one bounce onto the hands of the fielder. Look at that cloth from the back of his head flipping up as he was trying to jump. That air passing it through from the back of his head. He looks like Vinod Kambli. Definitely looks like Vinod Kambli. Look at that. Look at his face. I don't know whether he'll be happy or not. Vinod Kambli was an outstanding cricketer, lefty, classy, but interestingly, and was sadly couldn't play too much long for India. But he's still there. He's struggling, as I've heard, with daily finances and somewhere here in Mumbai also people have seen him. So some bad days which has been enduring for Vinod Kambli, and this is not a good day either for Anandu Prakash as he has to go back to the pavilion. I was mentioning bad days for Vinod Kambli as comforting him with his face of Vinod Kambli. And now Anand Prakash is bowled for just 1 run of 6 balls. The Timbers are dismissed off stump specially, and it's now 118 for 4 in 14.4 overs. As now Neymar 24 picks up his first wicket in the 4th ball of his 3rd over. Neymar 24 picks up his first wicket, and a 4th wicket is down for C Squad Cricket Club. Sonu Matthew is the new batter who has come up.
Already has faced the first ball, yet to get off the mark, gives himself some room, plays it inside out with an open bat face towards the man at sweeper cover. Will get off the mark now and will keep the strike. 15 overs done. It's 119 for 4 on the board for C Squad Cricket Club. Oh, goes down the ground. Where is the connection? The connection is not good because it's getting disconnected from the bat and the ball on towards the throat of the fielder. Standing in there at long on, it's Sonu Matthew who has to go back to the pavilion after scoring just 1 of 3, and it's the 5th wicket down for C Squad Cricket Club. It's 119 for 5 on the board. No, not exactly the stroke that he wanted to play, but he has finally has to be dismissed as Ajay Surya now gets the wicket to his name. Wanted to go down the ground long and hard, but unfortunately there was the fielder running in there and grabs it beautifully just inside that line. So half of the team is now back in the hut for C Squad Cricket Club. It's 119 for 5 on the board after 15.1 overs, and Ajay Surya now has 2 wickets to his name, 2 for 21. Hans Pradeep is the new batsman who has come out to the middle to join as Anand Sagar. The non-strikers end at 61 not out of 44. Ajay Surya has got his second wicket. Oh, what turn! What spin! But the bounce was not there. He was a little surprised, wanted to go off the back foot and play that stroke. It will slowly go beneath his bat and towards the safe gloves of the wicket keeper. I will try and repeat it. Flight that ball. He can flight as much as possible. He knows he does very well to deflect that bat at the very last moment, squeezing it towards the man at gully for a single. Get off the mark is Anspadi. And we'll give it to Anand Sagar now, who will try to use the long handle as much as possible now onto 61 not out of 44. Ajay Surya has to now do something different. Thank you for fleshing out my name, the production team. I hope everyone is loving it. He is loving it. He's enduring it. He is doing it beautifully. Anand Sagar, you absolute gem of a beauty. The fielder was acrobatic in his skills, but the skills has been defied by someone else. It's through the sword of Anand Sagar. Look at that connection way outside of some clank. It goes bang in there. He moves on to 67 of 45 with 5 fours and 4 sixes to his name. There's another one, this time almost in a Yorker position, can't do anything about it. This is beautiful bowling from Ajay Surya. What a nice comeback after that 6 being hit of his bowling. One more ball now remaining in this Ajay Surya's last ball of his spell. Can he dismiss Anand Sagar? Good ball, good ball. That ball spun. They will exchange numbers and Anand Sagar will keep the strike. 16 overs done. C Squad Cricket Club are 127 for 5. Ajay Surya, the captain, will also finish his bowling spell. 4 overs, 2 for 29 to his name. And I feel he's satisfied. He has at least gone below 30 and also has been able to capture a couple of wickets. But he would have been happier had he got the wicket of Anand Sagar. And he does well. 16 overs done, 127 for 5 on the board for C Squad Cricket Club.
आनंद सागर है स्ट्राइक पे, फेस करेंगे नेमर 24 को। राइट किया है, गेंद को स्लैश कर दे, उठा के मारा है सीधा, बिल्कुल सीधा। फिर से एक आवाज जरूर आएगी जब वो गेंद टकराएगी साइड स्क्रीन के साथ। अंपायर देखिए नाच रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, बोल रहे कि 6 के साथ और भी कुछ दे दीजिए, इन ये डिजर्व करते हैं। और क्या छक्का है, 74 पे पहुंच जाएंगे 48 गेंदों में। स्कोर अतिरिक्त हो जाएंगे 133 5 गेंदों में। 97 बॉल्स में 133। नीमा 24 को फिर से स्वागत किया है एक लंबे हिट के साथ आनंद सागर ने। हिटिंग है, क्या मसल पावर दिखाई है यहाँ पे आनंद सागर ने। फिर से नीमा 24, इस बार फ्लाइट डिलीवरी स्मैश कर दिया है, इस बार बाइसेक्ट किया है अंपायर और नॉन स्ट्राइकर को, सीधा चली जाएगी लेकिन लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। और इस बार अंश प्रदीप को मिल जाएगा मौका। क्या ये हाथ खोलेंगे, क्या ये स्ट्राइक देंगे? स्ट्राइक देना ज्यादा बेहतरीन है। अभी क्या ये 25 रन का आंकड़ा पार करके 100 रन कर पाएंगे आनंद सागर? इस बार फ्लाइट क्या है, उठा के मारने की कोशिश, बहुत ही ऊपर गया है, फील्डर ले लेंगे, लपक लेंगे आराम से। अंश प्रदीप को जाना पड़ेगा वापस पेविलियन की और एक मार के 3 गेंदों में, और छठा विकेट का हो गया है यहाँ पे पतन। सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब 134, 6 विकेट के नुकसान पे नीमा 24 को मिल जाएगा अपना दूसरा विकेट। वन 6 विकेट के नुकसान पे नेमार 24 फ्लाइट किया था गेंद को और सीधा आगे। यही इनविटेशन होता है आप टेलेंडर्स को, क्योंकि टेलेंडर्स का होता है काम कि अब जाओ हिट करो, एंजॉय कीजिए। और कभी कभी एंजॉयमेंट के चक्कर में उनको डे गवाना, बैठना होता है अपना विकेट, जैसे अभी हुआ है अंश प्रदीप का विकेट। लेकिन स्लॉग ओवर्स है ये, ना मार के अगर वो थोड़ा सा रोटेट करते आनंद सागर को स्ट्राइक देते। और ये देखिए फिर से स्लॉक करके मारने की कोशिश की थी आनंद सागर। देखिए नॉन स्ट्राइकर से बोल रहे कि अभी अभी एक गलती हो चुकी है, आप क्यों रिपीट कर रहे हो, ये गलती आप ना रिपीट कीजिए। उनका नाम हम जल्दी से आपको दिखाएंगे ये, लेकिन सही गेंदबाजी है यहाँ पे नेमार 24 के द्वारा। इसको फ्लाइट किया था आउटसाइड ऑफ स्टंप और मिथुन एस आगे हैं स्ट्राइक पे। अभी आगे मारने की कोशिश कर रहे थे आउटसाइड के बाहर, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। हल्की सी अपील थी जरूर नेमा 24 से, लेकिन कुछ भी नहीं। ये देखिए इस बार उठा के फिर से मारने की कोशिश, बहुत ऊपर चले गए। कौन है उसके नीचे? नीमा 24 ने बोला ये मैं खुद कर लूंगा जनाब, कोई भी मत आइए। तीसरा विकेट उनके नाम पे हो गया है और मिथुन एस पेविलियन के वापस चले जाएंगे डाक मार के, स्कोर को डिस्टर्ब किए बिना आराम से चुपचाप आए, 2 गेंद फेस किया और वापस चले जाएंगे। 7वां विकेट का हो गया है पतन स्क्वाड क्रिकेट क्लब 134, 7 विकेट के नुकसान पे।
पहले गेंद पे ऑफ द मार्क हो जाएंगे अश्विन प्रसाद। हल्की सी शॉर्ट डिलीवरी थी नीमा 24 के द्वारा, लेकिन 2 विकेट ने ले लिया यहाँ पे। और 17 ओवर के बाद 134 7 विकेट के नुकसान पे। Just 17 overs. The Squad Cricket Club 134 for 7. Deva Kumar to continue his third over. Full toss on the leg side. What did happen there? Anand Sagar says, "You go back. I don't want to take that single. I'll have to keep myself on strike." He has seen so many wickets going down of his colleagues, so he doesn't want to take that single. Is on to 75, and so when Deva Kumar delivers that full toss on the leg side, immediately says to Ashwin Prasad to go back to his crease. Again, want to just slog that on the leg side. The wicket keeper will fumble there. Will not get any connection there. It probably should have been a wide, but it's actually a dot now. But so back-to-back dot deliveries from Deva Kumar. I think intention is right when you're trying to slog it. You're only going for the boundaries, not trusting your colleague there. Because he's 25 away, but he's not, I'm sure, not concentrating on his 100. Slower delivery, wanting to squeeze it from the off stump. Where has that gone? Is there a catch? Is there a catch? No, there's nothing. He won't take a single. You cannot trust him again. He would only like to dig those ball out for some boundaries, and until unless it's very much required for some couple. Slow delivery again outside off stump. This time outside of stump, again try to play it very hard, but it will go towards that man at long off. Again, he will not pick up the single. So it's a hat trick. It's 4 consecutive dot deliveries now from Deva Kumar, but this is good bowling also from him. The slower ones. Again, a slow delivery outside off stump. He's trying to go down the ground. It's very, very, very high the ball, and he will take this time absolutely calmly. Anand Sagar has to go back to the pavilion after scoring 75 of 54. He perishes in the deep, but he has done absolutely everything that he needs to do for his team. He's a selfless cricketer, and he has proved to be one. 8 wicket down, and the C Squad Cricket Club are 134 for 8. On the leg side, that's a wide, but the wicket keeper has not done well to keep that ball at bay. Is there a single? Is that a single off the leg? Something has happened there. I don't know, because the camera movement is not happening, so not being able to understand. Or that ball must have hit on the face of the wicket keeper. I just hope he's okay. Has that ball? Yeah, something is in there. That's why he's trying to. Or did he collide with something in there?
Not being that's wide. That's wide being called from the umpire. I don't know exactly what actually has happened in there, but there will be one more ball remaining in the 18th over to be bowled from Deva Kumar. He has bowled a host of almost all the balls have been bowled with that slower angle ball. As Anand Sagar was not trusting his partner, but then perished when he tried to play that long stroke. So much of height in that ball, but the elevation was not correct and finally perished. Last ball of the 18th. A little bit uppishly played in the air. It was the man at long off. We'll get a single. We'll get more than a single. We'll get a couple of runs in there. And now both are going off. I believe it is the finish of the 18 overs. So 18 overs have been done and dusted. This is an 18 overs match. That's so bring an 18 overs contest. So after 18 overs, they have C Squad Cricket Club has scored 138 for 8. And that means, well, Nellore Warriors. That background cameraman don't entice me so much. I'll have to break my shackles and fly in from North India to South. But the target for Nellore Warriors is 139 in 18 overs. We'll be back with the action very, very quickly. But before that, I'll just run you through the scorecard of C Squad Cricket Club. As Anand Sagar, as always, 75 of 54, 5 fours and 5 sixes. Eric Matthew Abraham, 6 of 9. Then Shine John Jacob, 37 of 24. Then a host of single figures for Anandu KB, Anandu Prakash, captain, Sonu Matthew, Ans Pradeep, all scored 1, 1, 1, 1. And Midunez was a gone off the first ball, 0 of 1. Ashwin Prasad, 2 of 3. And Manish M didn't face a single ball. 14 extras. And in the wickets column, 3 wickets for Neymar 24, 2 wickets apiece for Shubham and the captain AJ Surya. 138 for 8 after 18 overs. The target for Nellore Warriors is 139 in 18 overs. We'll be back with live action of the chase very shortly. Don't go anywhere. Stick with us. Stay tuned. Cheers.
पैसे वाला, नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये है तवांग, द हार्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ द मोंगपास। जहां स्थित है तवांग नदी की घाटी में देश का सबसे बड़ा और लासा के पोटाला पैलेस के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जो तवांग मठ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तवांग एक तिब्बती शब्द है जिसमें ता का अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है चुना हुआ। दरअसल 300 साल से भी पुराने इस मठ के नाम के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग चू घाटी में बने इस मठ को 1681 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तो ने बनवाया था। एक मान्यता के अनुसार मठ बनाने के लिए इस स्थान का चयन एक काल्पनिक घोड़े ने किया था। कहते हैं मठ के संस्थापक मेराक लामा को मठ बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही थी। एक दिन वो गुफा में दैवीय शक्ति की मदद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना के बाद बाहर आए तो उनका घोड़ा कहीं खो गया। बहुत ढूंढने पर वो घोड़ा एक पहाड़ की ऊंचाई पर मिला, जिसके बाद मेराक लामा ने भगवान का आशीर्वाद समझकर घोड़े द्वारा चुने गए उस पहाड़ को ही तवांग मठ बनाने के लिए चुना। इस मठ को तिब्बती भाषा में गाल्डेन नामग्ये लात्से के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सेलेस्टियल पैराडाइज इन अ क्लियर नाइट। इस खूबसूरत स्थल को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक यहां आते हैं। इस मठ में 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी की खूबसूरती देखी जा सकती है। दूर से दुर्ग के समान दिखने वाले इस मठ के प्रवेश द्वार को काकालिंग के नाम से जाना जाता है। इस द्वार का आकार झोपड़ी नुमा है। साथ ही इसकी दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी बेहद उम्दा है, जो यहां आने वालों का मन मोह लेती है। इस मठ में 65 भवन हैं। मठ का मुख्य आकर्षण है यहां स्थित भगवान बुद्ध की लगभग 26 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली 3 तल्ला सदन, जिसे दुखांग के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहां एक विशाल पुस्तकालय पारखांग भी है, जिसमें प्राचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है। ऐसा माना जाता है कि ये पांडुलिपि 17वीं शताब्दी की है। यहां तवांग मठ के अलावा भी कई अन्य और मठ हैं, जिनमें अर्गलिंग मठ, जो दलाई लामा का जन्म स्थान माना जाता है,
रिंग्यालिंग मठ जो हरियाली और शांत वातावरण में स्थित है। इसके अलावा यहाँ कई पर्वत शिखर हैं, जिनमें गोरीचेन, जयशिला और सेला पास प्रमुख हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, कल कल बहती नदियां, गूंजते झरने और इतनी हसीन वादियां हैं जो इस जगह को स्वर्ग सी सुंदरता प्रदान करती हैं। और ये सुंदरता आंखों से होकर सीधे आत्मा को छू जाती है। तो प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य में मंत्र मुग्ध होने के लिए हो जाइए तैयार और निकल चलिए इस बार तवांग की हसीन वादियों की सैर पर। Incredible India. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित ये विशाल और अद्भुत मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से मशहूर है, जहां भगवान वीरभद्र की आराधना के साथ ही दूर दूर से लोग मंदिर के एक हिस्से में छत से झूलते इस पिलर को भी देखने आते हैं, जिस पर इस मंदिर की पूरी मजबूती टिकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस रहस्यमयी पिलर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की तो क्या हुआ? ये जानने से पहले आइए लेपाक्षी मंदिर के इतिहास पर नजर डालते हैं। रामायण में दिए गए उल्लेख के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर गए। जब राम इस जगह पर आए तो उन्होंने जटायु को मूर्छित अवस्था में देखा और कहा, ले पक्षी, यानी उठो पक्षी। इस तरह इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा। इस जगह की महत्ता को समझते हुए 16वीं सदी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना ने इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू कराया। मुख्य मंदिर के ठीक सामने ये है नाट्य मंडप। इसमें कुल 70 खंबे हैं। इस नाट्य मंडप के उत्तर पूर्वी कोने में यही है वो रहस्यमयी पिलर। 8 फीट लंबा ये पिलर जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद जमीन पर नहीं टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। अंग्रेजों ने इस रहस्यमयी आर्किटेक्चर की गुत्थी सुलझाने के लिए सन 1902 में अंग्रेज इंजीनियर हैमिल्टन को छानबीन के लिए भेजा। हैमिल्टन ने जैसे ही एक लोहे की छड़ को इस खंबे के नीचे डालकर पिलर को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी पिलर्स भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी छानबीन तुरंत रोकनी पड़ी। और ये रहस्य आज भी रहस्य ही है। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में यह कल्याण मंडप है, जिसका निर्माण अधूरा रह गया। इस मंडप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देव राय से यह शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जब वीरूपन्ना तक ये बात पहुंची तो उन्हें बेहद दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को सच कैसे मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाली और सामने की दीवार पर दे मारी। कहते हैं रक्त के ये 2 निशान इसी बात की गवाही देते हैं। वैसे लेपाक्षी मंदिर कई अन्य मामलों में भी काफी दिलचस्प है। जैसे कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित ये नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। ये नंदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है।
लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बने म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र भारतीय चित्रकला इतिहास के नायाब नमूने हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। अब जब आप लेपाक्षी मंदिर के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं, तो धार्मिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के इस नमूने को खुद निहारने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का एक बार तो रुख जरूर कीजिए। Incredible India. ना कोई हो कर का ना कोई पैसे वाला, नाचेंगे सब मिलके जीजा हो या साला।
அண்ணா அண்ணா ஒரு ஆள் மாத்திரம் சப்ஸ்டியூட்டு. பிரதர் மழை தூரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அஜித் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. லெஃப்ட் ஆம் ஓவர். ஒரு நிமிஷம். லெஃப்ட் ஆம் ஓவர். ப்ளே. White ball. வந்துடலாம். ஓகே பிரதர். And what a nice, beautiful stroke to start off the proceedings. Just down the ground, straight as an arrow. Oh, what a lovely stroke that was from Shiva. Full face of the bat. Even Sachin Tendulkar would have been very, very impressed with that stroke. They need 139 to win of 120. Now make it 134, actually, with that 4 and then a wide from Newdy. Wanting to slash it on the leg side, inside edge, and towards the fine leg fence for 4 runs. Shiva is winning business immediately here. Someone is going with some runs in a flurry here. After that first stroke down the ground, then a wide. Now I'm take inside edge towards the leg side for 4. Score is now rolling along. It's 9 for no loss in 2 balls. Need 130 of 106. Now for Nellore Warriors, they need a win. They have lost yesterday. Now wanted to slog sweep that, but doesn't get a good connection there. Shiva. He has got clear instructions. Don't hang in there. Start hitting the ball as much as possible, and is absolutely displaying what it means with Pratyush Raj at the other end. Is yet to get a feel of the cricket ball from Devudi. Full toss. Oh, he missed that one. He hits everyone, but this time, that's the way he should have done it. The one he is doing the shadow practice, exactly what should have been done. Comes down the wicket, misses the full toss completely. One bounce on the wicket keeper. And so much so happening in this over. It feels like it's a slog over. Mind you, it's the first over. So welcome back everyone to the chase. That's what I forgot to say. It was such dramatic to the chase here. Nellore Warriors now versus C Squad Cricket Club. Goes down the ground, one leg down. Oh, what a ferocious hit this was. I thought it was coming towards me from south of India to the north of India here. That's boundary, but I thought it was a 6, but it was a boundary. He is now saying to Anand Sagar, if you think that your innings was good to start off, mine is absolutely wonderful to start off. And Anand Sagar must be thinking that let me do something similar in the next one. 5 balls gone, 13 for no loss now. 3 fours and a wide, including 2 dogs. Clips it away. It's in the air. Bye bye. The cricket ball, and 2 bounces and across the boundary towards the square leg fence for 4. 4 boundaries in this over, and make that score count to 17 for no loss after the end of the first over for Nellore Warriors. Slightly. Right arm around. Left. അല്ല റൈറ്റ്
Right around. Bowler name. Bowler Shine. Name Shine. 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 Bowler name Shine. Okay, noted. Right arm around the wicket. Right arm around. Shine John Jacob at the off spinner has been introduced into the attack immediately in the second over. Huh. The C.H. Shiva, 16 of 6 the first over from the left-hander. Devadi has gone Right for arm over. 4 boundaries, including a wide and 2 dots. That started off with a perfect straight drive, which I said the GOAT, the little master, Sachin Tendulkar would have been impressed. And the stroke mean it started with in the very, very first ball, Dead ball. and then 3 boundaries again after that. And now the off spinner, Saint John Jacob, will be bowling to C.S. Shiva, wanting to slog it, but he was trying to slog it from almost from 5th or 6th down, but doesn't get the connection. But he is in a mood to treat himself with some atrocious hitting. And if every hit comes off, it might be trouble brewing. What saved him? What saved him? Immediately the bowler and the wicket keeper ask for a referral, and he'll be going upstairs for the Review TV umpire. for You have to LPW. wait and watch what Umpire's transpires. call, not out. Fielders review. Ball please. No, ಎತ್ತೋನ ಕೈ ಬೀರನಾ? No, sir? The only thing that must have saved him the height, or else it felt like the ball was crashing in onto the stumps, if not for the pads. It is also important to see from where the wicketkeeper is collecting the ball there, where it is pitching on middle. I think he's a goner. He is a goner for all shots until and unless he has a thick inside edge onto that pad. It looks absolutely plumb from what I am seeing from here. Really don't know when that seam. You can also see the off stump being flashing out, but if it's not that, and then I feel that he has to take the long walk back to the pavilion. We'll have to wait and see what the third umpire thinks. We'll have to wait for the official signal. Ball turn right. And he survives the pendulum of the hands from left and right to left signals that C.S. Shiva had survived. And can this survival scale produce? No, he doesn't want to hang up. He goes down the ground, goes huge, goes big, goes maximum for 6. What a lovely connection this is from C.S. Shiva. We'll move on to 22 of 9 and the score on to 24 for no loss. Wow, he is moving on like a house on fire. This is going to be a very, very interesting over. And now this from this off spinner. This is looking tough. This is looking tough from Sign John Jacob. The sign from his name is slowly moving out with those 6s. It's 24 for no loss in 1.4 overs. Now bowling.
പോകുന്നുണ്ടെന്നോ ബാക്കപ്പ് Two more. Ball number. Ball number. లాస్ట్ బాల్ Over. And that the dot delivery will signal the end of the over. 2 overs done and dusted. Nellore Warriors are 25 for no loss. ये बिल्कुल सही कनेक्शन था यहाँ पे। CH शिवा 27 पे पहुंच गए हैं उस बाउंड्री के हिसाब से 11 गेंदों में, और स्कोर का हिसाब हो गया 29 बिना किसी नुकसान के। और ये काफी अच्छा एक ओवर साबित होता हुआ अभी पहली गेंद पे मिडुनेस का रिवर्स इस बार, और ये रिवर्स कामयाब हो जाएगी क्योंकि गेंद जाएगी थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। CH शिवा पता नहीं क्या खा के आए हैं, और पार्टनरशिप हो गया 33 रन पे। पहले ऑन साइड पे फिर रिवर्स, ये बिल्कुल आज कुछ दूसरे ही मूड पे है, और ये जो मूड आज उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है ये विपरीत टीम के लिए खतरा हो सकता है। देखिए वो रिवर्स देखिए कितनी जोर से मारी थी, और बॉल बिल्कुल गोली की रफ्तार से चली गई थी। नेलोर वॉरियर्स अभी पहुंच गए 33 बिना किसी नुकसान पे, उठा के मारा है इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में, फिर से मौका है यहाँ पे रन्स तोड़ने का। सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब के पास अभी कोई मौका, कोई आंसर नहीं है। ये 6 रन के लिए चली गई है 39 बिना किसी नुकसान के, और अब ये मिडुनेस का ओवर 3 गेंदों में 14 रन चली गई है। ये देखिए बिल्कुल उस एक ऐसे एरिया पे गया है जहां पे फ्लैट अगर होता तो शायद कैच होता, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं है। वो अपने अभी गैप्स आराम से पिन पॉइंट पिक कर रहे हैं CH शिवा, क्योंकि पता है उनको पावर प्ले खत्म होते ही फील्ड स्प्रेड हो जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अपना धुआंधार परफॉर्मेंस जितना हो सके अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी 14 रन ऑलरेडी पहली 2 गेंदों में 4, और फिर अभी 6। 39 for no loss. भाई எங்க போன ராஜு आदर्श गेंद आ गई है, फिर से खेलने लायक बन जाएगी अभी ये। थोड़ा सा और स्पिन, 100 रन चाहिए अभी 93 गेंदों में। मिडुनेस फिर से फ्लाइट डिलीवरी किया, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, और ये फिर से कोशिश फिर से हो जाएगी कामयाब, और वहां पे वैकेंट रीजन की तरफ स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन मिल जाएंगे
सी एच शिवा पहुंच गए 41 सिर्फ 14 गेंदों में, 7 बाउंड्री और 2 छक्के की मदद से, और स्कोर पहुंच गया 43 बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर 10.4 गेंद सिर्फ 16 गेंदों में नेलोर वॉरियर्स पहुंच गए हैं 43। इस बार ये सोच रहे कि नहीं, इस बार हम विनिंग कॉलम में एक एक अंक जरूर इजाफा करने की कोशिश करेंगे। और क्या कोशिश यहाँ पे रंग दिखाएगी। हाँ, गुड बॉल, वेरी गुड बॉल, ये बिल्कुल बैट और बैट के से होके, और ये पूछ रही स्टंपिंग है कि बोल्ड है। और विकेट कीपर बोल रहे बोल्ड नहीं है, ये एक्चुअली मेरे हाथ से या लग के शायद गई है, लेकिन ये बच गए हैं। जो ये देखिए ड्राइव करने की कोशिश, एक्चुअली ग्लव से लग के स्टंप से गई, लेकिन थैंकफुली उनका बैक फुट वहां पे इंटेक्ट था और ये बच गया यहाँ पे। आखिरी गेंद, हाँ, स्लॉग स्लॉग, इस पर हवा में गेंद, वहां पे कोई भी नहीं है। ले लिया। ओहो, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं सी एच शिवा। ये देखिए क्या कनेक्शन बना है, फिर से 6 रन, इसके साथ ओवर भी हो गया खत्म। 3 ओवर के बाद 49 बिना किसी नुकसान के, और सी एच शिवा पहुंच गए हैं 47 नाबाद 16 गेंदों में। Short delivery, wanting to hike it away. Wow! Pratyush Raj now puts up a different show. It takes a leaf out of the book from C.H. Shiva that has gone towards the sweeper cover fence for 6 runs. And now the partnership is on to 55. Guess what? Of just 19 deliveries. Wow. Doesn't have to wait, doesn't have to give the direction. Just says, just go in there. Just go in, get this marching orders from my bat. The ball says, hi, Captain, Mr. Pratyush Raj. He moves on to 7 of 3, and now Nellore Warriors are 55 for no loss in just 3.1 overs. Again, over the top. This was, again, this time I felt he must be very gracious and thankful that it didn't go straight down the throat of the fielder at cover, probably just in front of him. Mitri. So Matthew again on to produce Raj. This time slogs it away. Just short of that fielder at mid-on. I remember playing EA game sports, just hit Control F, Control S, and they will be playing different strokes. It just feels like a computer game at the moment. Sonu Matthews and to produce Raj again, using the long handle towards the cover again, bisecting every fielder. That's the wide cricket ball going towards one of the dugout. Oh my gracious goodness, lords! This is not a highlights. This is a live action right here from the Vellore Cricket Institute ground here. Both C.H. Shiva and now Pratyush Raj are putting up a show here, and which is so difficult to digest here. This is becoming more and more difficult to digest for C Squad Cricket Club. This is another shot, this time off the back foot, smashing it away out of oblivion from Pratyush Raj. He will move on to 17 of 7, second 6 of his Ballade, and the first and 1-4. Very short as a spinner to bowl such shot. I really don't have any words. I don't have any sympathy also for you. I'm sorry, Sonu Matthew. He has gone for 16 of 5 balls, and now they are like rolling along. Look at. They need 74 of 85. Just flipped the equation now here. One more ball remaining in the 4th over. The score is 65 for no loss for Nellore Warriors. Little bit short again on the offside, hits it away. Oh my God, I have nothing much to say. Bring in some new synonym. I cannot keep on repeating the same words. Someone just help me.
And he has actually helped him for himself for 671 for Nolos in 4 overs. Fatih Raz moves on to 23 of 8, 1 4s and 3 6s. This is a show, this is an exhibition show of 6s and 4s of the highest caliber from Nellore Warriors. They need a win, and they are bowler now Shine. galloping, racing along for that win comfortably versus the C Squad Cricket Club. Oh, oh, I have no words. Did someone open the synonym? Did someone bring up the Oxford Dictionary to find us some new words of expression for this explosive batting here from Nellore Warriors? Oh, this time it's C.H. Shiva who has again got on the act. This is wow. That's just absolutely wow hitting. Bang, whoop, and well, this is gone so far. That's cricket ball. I'm sure it doesn't want to come out of its shell. It's Friday. It's not Sunday. Really, the cricket ball has to come back to the business, get some fodder hitting. This is such a disdainful treatment here. Brought from CHC1 Pratyush Raj. He's brought up his 50, also 53 of just 17 balls. Pratyush Raj, 7 4s and 4 6s. The strike rate is 311.76 for CH Shiva. This is humongous, absolutely humongous hitting from both these batters. 77 for no loss in 4.1 overs. Shine John Jacob again gives himself room. This time towards the fine leg fence. Another six is going on. This is marketing of sixes of the highest order. Absolutely of the highest caliber. Six, Ball, watch out. six. Oh my goodness gracious. Now they need 56 of 82 balls. The overs are not drying up. The runs are actually drying up. It's getting more and more stronger. This is another one on slog sweep. This time it will be slowing up. Didn't get that middle on the bat very comfortably. Was that a highlights package? Someone say it's live. Someone just put it as live, please, for me. This is absolutely hitting the ballers to the cleaners from both these batters. Now Pratyush Raj, the left-hander, will be on strike. Over the wicket, will be bowling his sign John Jacob. Doesn't fight the ball too much. An appeal, not from the umpire, and the dreaded finger from his left hand comes up. Pratyush Raj will be a goner. Shine John Jacob finally gets a wicket and the first breakthrough for his team. Nellore Warriors are now 84 for 1 as Shine John Jacob has to go back to the pavilion after scoring 23 of just 9 balls, 1 4s, and 3 6s to his name. Sambar is super. Sambar. White rice. I love white rice. Biryani waste, sir. Biryani waste. White rice good. 28 பாலுக்கு 84 இவர் இல்லை டீம் ஸ்கோர் 84 இவரது
84 for 1 in 4.4 overs. Look at that run rate. 18 runs currently moving. First wicket is down. And is now Shine John Jacob will be bowling on to the captain Aegis Surya. First ball flicks it off the leg for a single to get off the mark. Last one. See Shiva 60 not out of 19 balls. As Pratyush Raj has gone out for 23 of 9. But Aegis Surya has played 108 matches, 2,650 runs, with an average of 31.93, strike rate of 151.60. Gives himself some room. The leg stump is uprooted. That is Over. when you try and make something different. Both the openers now back in the hut. It's 85 for 2, 5 overs bowled. And it's now CS Shiva who has to go back to the pavilion for 60 after having faced 20 balls, 7 fours, and 5 sixes. 85 for 2 after 5 overs. प्रतीक रे जांबा So 5 ओवर के बाद Nellore Warriors 85 2 विकेट के नुकसान पे दोनों ओपनर्स अभी पेविलियन में बैठे हुए हैं और आखिरी विकेट जो दूसरा विकेट गया था वो CH शिवा का था जो 7 रन बनाए थे सिर्फ 20 गेंदों में। अब एक स्लिप है विकेट कीपर के साथ मिटुनेज बॉलिंग करेंगे लेफ्ट आर्म स्पिन उठा के मार दिया है और ये फिर से जाएगी सीमा रेखा के बाहर दंदनाता हुआ ये बाउंड्री। पहली ओवर में 24 रन आ गए थे और अभी उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा अभी मुझे राहत मिलेगी लेकिन फिर एजे सूर्या ने जी कहा जी नहीं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो पहुंच के 5 रन 2 विकेट की दो बॉल खेलने के बाद और 89 पे पहुंच गए हैं अभी स्कोर टीम का। एक ड्राइव एक अच्छा सा हल्का सा ड्राइव स्वीपर कवर फील्डर की तरफ से और स्कोर पहुंच जाएगा अभी 90 2 विकेट के नुकसान पे 5 रन देते हुए अभी इस ओवर में अभी नेमार 24 नेमार 24 स्ट्राइक पे ओवर द विकेट आएंगे लेफ्ट आर्म और ये वाइड का इशारा अंपायर से 1 रन अतिरिक्त अभी आ जाएंगे खाते में स्कोर पहुंच जाएगा 91 2 विकेट के नुकसान पे और 4 गेंदे बाकी हैं उनको चाहिए 48 76 गेंदों में। नेलोर वेरियस को उठा के मारा है अभी हाथ से निकल गई ये गेंद हाथ में जरूर थी वहां पे लग के उनके पीछे चली गई है। हाँ और रन भी नहीं लिया शायद उनको लगा था कि ये 4 6 या शायद आउट हो जाएंगे। जल्दी हाथ को जल्दी बंद कर दिया था वहां पे लिखे डॉट डिलीवरी और फिर से उसी जगह उठा दिया। इस बार कोई भी मौका नहीं है सिर्फ दर्शक बने रह गए हैं वही फील्डर बिल्कुल फैंस के पीछे जो खेती है जहाँ पे वो पैर बड़े बड़े वहां जाके गिरी है। हाँ ये काफी लंबा सा हिट आया है अभी गुस्से से मारा होगा अभी इसको नेमार 24 ने। वाह वाह जी वाह ये तो देखते ही बनता था
देखते ही बन दूर से ब्रायन लारा की भी थोड़ी सी झलक लगी मुझे। हाँ, काफी खुश होंगे। ऊपर से लाल मैरून कलर का, तो वेस्ट इंडीज की तरह लग रहे थे जब वो शॉट खेला उन्होंने। हाँ, फिर से उठा के मारा है लेग साइड की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, फिर से 6 रन। हाँ जी वाह, ये टीम नेलोरे जो कल तक थोड़ी धीमी खेल रही थी, हार भी गई थी, आज अचानक से कुछ दूसरे ही आत्माओं ने यहाँ इनके अंदर प्रकट होके कैप्चर किया हुआ है। वाह जी वाह, ये होना चाहिए। अगर यही प्रदर्शन वो करते रहे तो आने वाले समय पे आने वाली टीम्स के लिए खतरा हो सकता है। इस बार देखिए फिर से उठा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन वाइड इशारा, और 100 रन का आंकड़ा भी पार करते हुए 6 ओवर भी हुआ नहीं है। 104, 2 विकेट के नुकसान पे एक और गेंद बाकी है अभी। 35 रन चाहिए अभी 74 गेंदों में। फ्लाइट किया हुआ है अभी, डाउन द ग्राउंड बाइसेक कर दिया है अंपायर और नॉन स्ट्राइकर को। फील्डर एक है मौजूद, 1 रन मिलेगा और ओवर भी हो गया खत्म। कपल ऑफ रन मिल जाएंगे। 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 105, 2 विकेट के नुकसान पे। Ball on please. வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க. Bro, you are a middle player. Good name? Anandu. Anandu KB. ஸ்கோரிங்க பால் ஆட்டு கொடுத்துருங்க. क्या कहानी रची है यहाँ पे। 6 ओवर में 105, 2 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक रेट देखिए करंटली 17.50। अभी उनको सिर्फ चाहिए 34-72 गेंदों में 8 विकेट बाकी है। नेमा 24, 13 नाबाद 4 गेंदों में। एजे सूर्या कैप्टन, नॉन स्ट्राइकर पे 6 नाबाद 3 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 3 रन से भी कम अभी। आनंद के भी नया बॉलर इंट्रोड्यूस किया गया है कप्तान की द्वारा। क्या रणनीति होगी, क्या सोच रहे होंगे। अभी थोड़ा सा हल्के से फ्लिक कर दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पे, कोई रन नहीं, लेकिन इसके सूझबूझ के साथ बॉलर्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। एक खतरनाक मूड में लग रहे हैं ये दोनों बैटर्स, दोनों ही नहीं, पहले भी जो जो दोनों ओपनर्स थे, दोनों ही आते ही बिल्कुल चलका दिया था स्ट्रेट। ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल ड्राइव करने पे इनवाइट किया था, इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया और आज सुंदर सा ड्राइव भी कर दिया था, कोई रन नहीं। तो बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज यहाँ पे आनंद केवी का ये नया ओवर शुरुआत होते ही। इस बार हल्के से वेट किया इस गेंद को आने के लिए और उसको पुश कर दिया है लेट लेट कट के लिए, डीप गली की दिशा में। 1 रन मिलेगा और एजे सूर्या कैप्टन आ जाएंगे स्ट्राइक पे अभी उस 1 रन के बदौलत। स्कोर पे इजाफा होते हुए 106, 2 विकेट के नुकसान पे। 6.3 ओवर के बाद 50 गेंद हुए भी नहीं है, स्कोर पहुंच गया 106। काफी टेरिफिक हिटिंग्स देखा है हमने। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पुराने मैच का कुछ रिकॉर्डिंग चला दिया हो। ओहो हो, कहाँ जा रहे हैं आप भाई साहब, बिल्कुल सीधा, कुछ लगा नहीं है ठीक से। और अंदरूनी किनारा लगते हुए अच्छा हुआ कि ये गेंद स्टंप्स पे नहीं लगी, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था उनके लिए। अच्छा गेंद, थोड़ा स्लोअर था। अभी स्टंपिंग भी फास्ट हो जाएगी, स्लो स्टंपिंग नहीं, स्टंपिंग थोड़ा सा फास्ट ही था। और कैप्टन एजे सूर्या बिल्कुल पीली रंग का हेलमेट, पीले रंग के पैड पहन के आए हुए थे, लेकिन उनको जाना पड़ेगा पवेलियन के रास्ते। और 3 विकेट अभी हो गया है, 3rd विकेट का हो गया है पतन। नेलोर वॉरियर्स 106, 3 विकेट के नुकसान पे।
Subham. One not six. Shubham, new batsman name. Subham Nanas. एक सौ छह 3 विकेट के नुकसान पे एक और गेंद बाकी है 7वें ओवर का। आनंद केवी को मिल गया पहला विकेट 1 for 1 अभी उनके नाम पे 5 गेंदों में, तो खुश होंगे अपने इस फिगर से। अभी बॉलिंग करेंगे अभी और शुभम को आउटसाइड एज मिसफील्ड हो जाएगा और क्या एक रन आएगा? नहीं जी, एक रन नहीं आएगा और अभी भी वो ऑफ द मार्क हुए नहीं है। 7 ओवर के बाद नेल्लोर वॉरियर्स 106 3 विकेट के नुकसान के सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब के विरुद्ध ये चेज कर रहे हैं 139। अभी सिर्फ चाहिए 33 66 बॉल्स में। Batsman right arm around wicket. Nellore Warriors, they need 33. Make it 33 minus 6. 27 now need with that huge hit from Neymar 24. Up goes the hand of the umpire. So many times it has gone either across or diagonally just on the sky. Neymar 24, what the position of this cricket stroke he is. 20 not out of now 8 balls. He is saying, let the wickets go by. I'll have to keep on doing what I have promised, probably at the dugout. That this is how I'll be going about my business. But this is some hitting. This is absolutely taking the ballers to the cleaners. Sonu Matthew, 28 runs. He has given off 7 balls now. This is really not the day that you'll love to remember. Now they need 26 with that single. A quicker one this time from Sonu Matthew. Only how it is flipped across. I never thought that today I'll be doing my commentary for a highlights package. It's like a live highlights package. Oh, so good from Nellore Warriors. They need a win, and it might just be coming very, very soon. To flick that ball, but ball has done enough to come back and across, and so eventually back to the bowler along the pitch. 3 more balls remaining in this 8th over. Short delivery again, wanting to play a little bit slowly this time on the offside. But now again, it's Neymar 24 who will come back and strike to face Sonu Matthew. Now Shubham gets off the mark on his 3rd ball. Flies that ball, waits that ball for that come. Neymar 24 asks, can you come? Shubham says, yes, I can, and eventually finishes off a very, very nice and nice, well called up single. Make the score move on to 115 for 3. Don't have to do anything unorthodox or something which will be risky for them. The last ball of the 8th over, very, very short. Cuts that ball, but will find a fielder at point. No run, 8 overs done. Nellore Warriors 115 for 3. ஒரு நிமிஷம் இருங்க காட்சண்ணா.
Oh, points it away, plunks it away, smashes it away. And under six here, make the equation now 18 of 58. Ananto Kebi has been welcomed with a six of the very first ball that he bowls of the second over. And of the blade of Neymar 24, he is putting up another show now for himself after both the openers are back in the hut. He goes on to 28 of 12. No fours to his name, but four sixes has come on to himself. 24 has come with those four sixes out of the total of 28 that he has made for himself. And giving again short delivery, this time not too much of a connection. Probably it has hit little bit above, little high above on the bat. That's what he's trying to be showing himself at a non-striker. This is good hitting, very good hitting. This is little short. This is little in the air also. Oh, he could have probably not responded to that one very well, but it stood up as it held up in the sky. But thankfully, in the no man's land, he'll get a single. He'll give the strike to Neymar 24, who's hitting the ball very hardly. Again, wanting to smash that, will go down the ground. So much of power behind that stroke. I couldn't see the ball. It just went past the bowler and the umpire like a flash of light. Absolutely cannot track that. I just could see that he danced just to evade that the ball from getting hit onto him, getting injured probably. Last ball of the ninth over. Need 15 more now. Nellore Warriors inside out stroke this time from the bat of Shubham, the left-hander. Two bounces on towards that man at long off. We'll get a single. We'll keep the strike. And 9 overs done. Nellore Warriors are 125 for 3. Why? No, that's the grass. Sir, bowler name Sonu. Bowler name. Name. Shine. Right arm around it. 125 3 विकेट के नुकसान में अपील ये शायद गई है लेग साइड पे 9 ओवर के बाद 125 3 विकेट के नुकसान पे नेलोर वेरियर्स और क्या खेल रहे हैं अगर ये 250 का भी अगर टारगेट होता ना तो शायद आज ये पार कर जाते लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्रिकेट एक अनिश्चित का गेम है अपॉर्चुनिटी काफी है लेकिन कभी-कभी ये मिस टाइम्स ही हो सकता है डाउन द ग्राउंड चले गए हैं अंपायर और बॉलर के सर के ऊपर से मारा इस बार शुभम ने जितना जल्दी हो सके अभी इस मैच खत्म करने की कगार में है ये टीम एग्जैक्टली अभी 2:01 हो गया है टाइमिंग के साथ कुछ नहीं जस्ट मैं समय बता रहा हूँ 13 रन चाहिए और अभी 59 गेंदों में मेक इट 58 गेंदों में अभी सिर्फ कोई रन नहीं मिलेगा नेमार 24 30 नाबाद अभी 14 गेंदों में अभी फ्लाइट कर दिया ओहो मिस टाइम ये बहुत ऊपर चली गई है विकेट कीपर उसके नीचे ओ ड्रॉप कर गए हैं एक दूसरी फील्डर भी आ गए शायद उन्होंने ये दोनों ने यही नहीं कहा कि इट्स मी वो बहुत जरूरी है डाइव लगा के कैच पड़ने की कोशिश की थी शायद दस्तानों में थोड़ा सा लग के ये गिर गया है ये देखिए बिल्कुल जैसे ही गया विकेट कीपर उसके पीछे दौड़ के गए थे लेकिन ये डाइव बॉल पहले गिर के डाइव शायद बाद में आया लेकिन ये जैसे ऊपर जाता है बहुत मुश्किल पैदा करता है और रिवर्स करके शॉट खेलने की कोशिश की थी इस बार शुभम ने लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंडर बन के खेलने की कोशिश की थी एक लेग बाय का इशारा हाँ जी वहां पे लेग बाय तो अभी आ जाएंगे नेमार 24 स्ट्राइक पे 31 खेल रहे हैं और वो भी रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे और उनको कंप्लीटली मिस हो जाएगा इस बार
तो ओवर भी हो जाएगा खत्म। Required. 10 ओवर के बाद नेलोर वॉरियर्स 128. 128 3 Required, विकेट required. के नुकसान पे। How many runs required? 11 ரன் வேணும். 11. 11 need. இங்க சைட் Side, side, சேஞ்ச். side. 11. 11 need. சைட் சேஞ்ச். നീ പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി, ഓടണ്ട അത്ര. അനന്തു കെബി. Towards you. That's your leg. और इस मैच के बाद एक आखिरी मैच भी बाकी है आज, जो है सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब वर्सेस स्ट्राइकर्स एकेडमी के विरुद्ध। वो भी एक अच्छा मैच होगा। स्ट्राइकर्स एकेडमी आज मैच जीत चुके थे विक्ट्री वाइपर्स के विरुद्ध, और सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब अभी जूझ रही है इस मैच को, जूझ तो रही है और बहुत ही ज्यादा जूझते जूझते शायद हार भी जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 7 रन की जरूरत है अभी इस बाउंड्री के बाद। क्या जोरदार करारा प्रहार लगाया है यहाँ पे, 4 रन मिल गए, अभी सिर्फ 7 रन की जरूरत। बहुत सही कनेक्शन, जो भी उन्होंने बैट पे सही जगह लगाया, सारे दिशा के साथ ही गए हैं। और कभी सोचा नहीं था कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और किसी ने कुछ तो कहा होगा कि आपको इजाफा अगर करने नेट रन रेट में ये खुल के गया है, और देखिए बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में ये गया है गेंद, फिर से 6 रन गया है शायद इस पर स्क्वायर की दिशा में, ये 6 रन, तो अभी सिर्फ 1 रन की जरूरत है। स्कोर्स लेवल हो गया है इस शॉट के साथ। ओह माय गुडनेस ग्रेसियस, क्या उनको कहीं पे ट्रेन पकड़नी है, क्या फ्लाइट पकड़नी है, इनको कहीं जल्दी से जाना है इस टूर्नामेंट के बाद। वाह, जो भी है आज उन्होंने कर दिखाया नेलोर वॉरियर्स की बल्लेबाजों ने, कि हम भी यहाँ पे दम रखते हैं मैच जीतने के लिए। ये फुल टॉस धीरे से खेल लिया है, और ये रहा आपकी जीती हुई 1 रन, और इसके साथ नेलोर वॉरियर्स जीत जाएंगे इस कॉन्टेस्ट को 7 विकेट से। नेमार 24, नाबाद 31, 17 गेंदों में, शुभम 15, नाबाद 15 गेंदों में। और यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड बताते हुए शिवा 7 और 20 गेंदों में 7 4 और 5 6 पृथ्वीराज विकेट कीपर 23 मार के 9 गेंदों में 1 4 और 3 6। एजे सूर्य कैप्टन ज्यादा नहीं कर पाए, 6 रन बना के 5 बॉल में, और नेमर 24, नाबाद 31, 17 गेंदों में कोई फोर्स नहीं है, 4 6, और शुभम 15, नाबाद 12 गेंदों में 1 4 1 6। सो एक बेहतरीन जीत दखल हुई है यहाँ पे नेलोर वॉरियर्स के, इनके पहला, क्योंकि कल जब इनॉग्रेल डे था वहां पे हार गए थे, तो आज उनका पहला जीत है। एक और मैच है तो इससे जाएगा नहीं, और वो स्ट्राइकर्स एकेडमी वर्सेस सी स्क्वाड क्रिकेट क्लब के विरुद्ध में होगा। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, और जल्दी मिलेंगे तीसरे मैच के लिए। बाय बाय।